Hello students, so in this video we will study about menstruation cycle. So menstruation cycle hame केमती define करिबा. It is the periodic discharge of blood, mucus and cellular debris from the uterine wall as well as ovum during the reproductive lives of a women. So women body रे or female body रे कौन होबो blood, mucus plus cellular waste or dead cell uterine wall ru remove hobo as well as ovum etiki sabu jako remove hobo that is called as your menstruation cycle. तो menstruation cycle definition बुझा पड़ला periodic discharge. Periodic माने कोन repeat होची this cycle repeats itself after a certain period of time. So that the cycle repeats after 28 days. Next first time ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ puberty or menstruation start होची female body रे or the first puberty is called as your termed as your menarche. ଯେତେବେଳେ first time ପାଇଁ start होची ତାକୁ କୁହା ଯାଉଛି menarche. So menarche can be defined as the first menstrual flow is called as your menarche. जोटा कि in case of females हमें देखिबा around 13 to 15 years age भितरे. And similarly menstrual flow stop हो जाଉଛି after certain age, that is by 45 to 55 years, and that is termed as your menopause. So menarche is the starting of menstrual flow and menopause is the stop of menstrual flow. Pregnancy time रे menstrual flow हबने or we can say menstruation is suspended during or it is absent during pregnancy. Reason कौन pregnancy होइछि माने कौन तार अर्थ कौन कि ऑलरेडी गोटे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गोटे सेल रो डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जाइगोट फॉर्म होइकि तार डेवलपमेंट चलीछि तेनु करी कि हमको आउ गोटे सेलुलर फॉलिकुलर सेल रो डेवलपमेंट दरकार नाही. सो एट दैट टाइम no menstruation cycle occurs. So menstruation cycle consists of your 4 phases. First phase is called as your menstruation phase, second is called as your follicular phase, third is called as your ovulatory phase, and fourth one is called as your luteal phase. So in this diagram I will explain you about all the 4 phases or menstruation cycle. Okay, so this diagram represent your events during menstruation cycle. So this is your first phase, second phase, third phase and fourth phase. And हमें कौन कौन changes देखिबा. Change in ovary रे, so this represent change in ovary रे कौन कौन changes होची. hormonal changes कौन कौन होची. hormonal एठी हमें estrogen रो changes देखिबा, estrogen जोगु progesterone जोगु changes देखिबा. नेक्स्ट यूटेराइन वाल यूटेरस लाइनिंग रे कौन कौन चेंजेस होची ऑब्जर्व करिबा. प्लस केते डे को साइकिल और को फेज केते डेज जाय चलुची. प्लस हियर विल सी द पिट्यूटरी ग्लैंड रो रोल कौन रोचे. सो स्टार्ट करिबा फर्स्ट फेज दैट इज योर मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज. सो फर्स्ट फेज रे कौन हबो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिबा मेंस्ट्रुएशन माने जानिचे एंडोमेट्रियम लाइनिंग लॉस्ट होची, डेड सेल, ब्लड, म्यूकस ए सब जाक रिलीज होची. सो यूटेरस रे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थाउची एटा रिलीज हो जाउची और यूटेरस रो डिटैच हो जाउची और बॉडी बाहर को फ्लो होची. सो दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग रेड कलर जोडा शो करची दिस इज योर एंडोमेट्रियम लाइनिंग. सो कौन होची दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल गेट लॉस्ट. सो एटा होची यूट्रस रे. नेक्स्ट हार्मोन्स कौन रोची. एस्ट्रोजन लेवल लो थाउची, प्रोजेस्टेरोन लेवल भी लो रोची. फर्स्ट फेज रे बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर लो. नेक्स्ट ओवरी रे कौन कौन चेंजेस होची. इनसाइड द ओवरी वी विल सी दिस इज द एग नेस्ट. ओके, एंड दिस आर द एग नेस्ट रू डेवलप एग नेस्ट. ए एग नेस्ट रू गोटे उगोनिया रिलीज हेकी से प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन हबार स्टार्ट करियो. वन उगोनिया विल start forming primary oocyte. So ए तीनटा चेंजेस देखिले. नेक्स्ट सो एठी ए केस रे हम कोन देखिथिले प्रोजेस्टेरोन लेवल लो रहउची. सो दिस लो प्रोजेस्टेरोन जोगु कोन हबो से प्रोजेस्टेरोन लेवल लो थिबा जोगु से हमर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करिवो टू रिलीज FSH. So because progesterone level is low, it will influence your pituitary gland or it will cause the pituitary gland to secrete FSH. So now FSH production will increase. Now this is your second phase. FSH production increases.
So ଯେତେବେଳେ FSH production increase ହେଲା, FSH କ'ଣ follicular stimulating hormone. So this will stimulate your follicle. This hormone will stimulate your follicles. So follicles को केमती stimulate करियो for the development. So already primary oocyte formation start ହେଇची कहूଥିଲି. So now this primary oocyte or primary follicle रो change ହେଇ से Graafian follicle form करियो. So primary follicle रो secondary follicle रो tertiary follicle and finally mature Graafian follicle form होबो in second phase, that is follicular phase. जेहेतु follicular development होची ताको follicular phase कुआ जाउची. So FSH रो influence रे follicular changes होबो from primary follicle to it will form mature Graafian follicle. So during this development of follicle, a follicular development जोगु estrogen hormone secretion होबार start होबो. Gradually the level of estrogen will increase. So here you'll see level of estrogen gradually increases. Progesterone will remain low. Next, जेहेतु एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होची, so inside the uterus कौन होबो एबे एस्ट्रोजन जेमती ग्रेजुअली बढ़ी चलीची. सिमिलरली यूट्रस रे कौन होबो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ग्रेजुअली फॉर्मेशन होबार स्टार्ट होबो. धीरे धीरे एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी फॉर्म होबो inside the uterus और uterine wall ऊपर endometrium lining formation start होबो. Plus endometrium lining will become 2 to 3 mm thick and it will be containing blood vessel and uterine glands. Formation will start. This is your follicular phase and it is also called as your proliferative phase. Proliferative phase kahi kuha jauchi because proliferation of endometrium lining or uterine wall occur. Proliferation माने new formation. Okay, repair जुड़ा कहि परिबा. Repair and proliferation of endometrium lining in the uterus occurs. So it is also called as your proliferative phase. Next, third phase. So second phase रे कोन हेतला estrogen level high अछि. So this high estrogen will cause the pituitary gland to decrease the FSH and increase the LH secretion. So जेहेतु एबे estrogen level high अछि से pituitary gland को कोन करिवो और estrogen level high थिबा जोगु एबे pituitary gland FSH secretion decrease कर दबो and LH secretion करिवार start करिवो. So now LH is released. So LH produce हवा फल रे जेहेतु LH रिलीज है पिट्यूटरी ग्लैंड रू एबे LH जोगु मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अच्छी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH इट विल स्टार्ट रप्चरिंग से ब्रेक डाउन हो जिवो और रप्चर हो जिवो एंड सेकेंडरी oocyte रिलीज करिवो. दिस प्रोसेस यू नो दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज सेकेंडरी oocyte. सो नाउ सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवेरी. सो हियर एस्ट्रोजन लेवल इज हाई. प्रोजेस्टेरोन एज यूजुअल लो अच्छी बट एस्ट्रोजन हाई अच्छी तेणु करिकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग फॉर्मेशन भी बढ़ुची. ए केस रे फुल्ली डेवलप एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल फाइंड. ब्लड वेसल्स ठीक हो जिवो, यूटेराइन ग्लैंड सिक्रिटरी हो जिवो इन दिस केस. सो दिस इज योर थर्ड फेज ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज कहा जाउची बिकॉज ओव्यूलेशन ऑकर इन दिस फेज. दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज. नेक्स्ट फोर्थ फेज कौन LH प्रोड्यूस होबा द्वारा हमर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हला. सो सेकेंडरी oocyte रिलीज हला. सो द रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल will convert them into corpus luteum. So LH रो इन्फ्लुएंस रे सेकेंडरी oocyte रिलीज हला आ जो बड़का सेल्स रही गला एमाने सब कन्वर्ट हेजबे इनटू corpus luteum. सो नाउ corpus luteum रो काम कोन जेतोल corpus luteum फॉर्म हला corpus luteum प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करिवारे लागिबो. सो एबे प्रोजेस्टेरोन लेवल ग्रेजुअली बढ़िबो. एस्ट्रोजन लेवल एडी हाई थिला so it is high here. Now it will gradually decrease. Is it clear? So estrogen level will decrease and progesterone level is high. जेहेतु corpus luteum formation हला progesterone level will increase. Now we'll see two cases. First, if sperm enters and the secondary oocyte get fertilized. जदि sperm enter कला और secondary oocyte जदि fertilize हला तो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हला माने जाइगोट फॉर्म हला. सो जाइगोट फॉर्म हला तो मीन्स प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहिबो. फर्टिलाइजेशन रो अर्थ कोन प्रेगनेंसी. द फीमेल इज प्रेग्नेंट. सो द प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू फॉर 9 months. सो throughout that 9 months corpus luteum will remain
and it will continue secreting progesterone secretion continue रहिबो. सेकेंड केस जदि फर्टिलाइजेशन हैला नहीं, जदि सेकेंडरी oocyte स्पर्म संगे फर्टिलाइज कला नहीं, तो जदि सेकेंडरी oocyte स्पर्म संगे फर्टिलाइज कला नहीं ताहेले कर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे कन्वर्ट हो जिवो और चेंज हो जिवो, डिजेनरेट हो जिवो इनटू योर कर्पस अल्बिकेन. तो कर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगी जो कर्पस अल्बिकेन्स फॉर्म करिवो तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होबारे लगे. द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस. Is it clear? So this is about your hormone. Next coming to uterine wall. Uterine wall रे कोन हम जेतोले प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन हेकि रहबो प्रेगनेंसी पे तार अर्थ कोन माने एंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक हेकि थिबो यूटेरस रे एंड इठी फर्टिलाइजेशन पर जाइगोट आसिक अटैच हबो एम्ब्रियोनिक चेंजेस ब्लास्टुला फॉर्मेशन मोरुला फॉर्मेशन सब जाक हो पार थ्रू आउट द प्रेगनेंसी दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल रिमेन. बट जदि फर्टिलाइजेशन हैला नहीं प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो जिवो, डिक्रीज हो गले एंडोमेट्रियम लाइनिंग डिजेनरेट हो जिवो. सो एंडोमेट्रियम लाइनिंग डिजेनरेट. सो डिजेनरेट माने वी आर कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट फेज. एंडोमेट्रियम लाइनिंग डिजेनरेट्स. So this cycle again repeats. Endometrium lining degenerates, then again formation occurs, then again like this. Similarly, till last रे कौन है जी progesterone level low. Excuse me. Progesterone level low और estrogen level भी low. So see progesterone low, estrogen low. ओवेरी रे कौन चेंजेस है जी corpus albicans form हो जाइए. This corpus albicans कौन white body जोड़ा कि scare like remove हो जिवो from the body. Again new follicular development will start. So this fourth phase is called as a luteal phase. Luteal phase कहेंगे because corpus luteum जोगु ए phase रो lifespan और corpus luteum defines the lifespan of the phase of this phase. So 5th to 28th day is the lifespan if fertilization does not occur. If fertilization occur, then it will remain throughout the pregnancy. So this is about your events during menstruation cycle. Next we'll see few points about this. So menstruation is often described as weeping uterus for lost ovum. So someone has said that menstruation is a weeping of uterus for lost ovum. So ovum has been lost by the uterus, so it is weeping, that's why it is bleeding. Next, menstruation phase is caused by the reduction of progesterone and estrogen hormone. Menstruation phase हम केतल देखिबा because of reduction less of progesterone and estrogen. Proliferative phase रे कोन होची increase in estrogen level अधिक थिले proliferative phase. LH causes ovulation. LH secretion जोगु ovulation होची. Secretory phase रे कोन होची it is caused by increase of progesterone. So progesterone hormone increase होबा जोगु secretory phase start होची. Here in short table like form explain कर दीजिए चारटा जगह process. phase menstruation phase केते days 1 to 5 day कौन कौन event होची देखो menstruation phase रे endometrium lining break होची, menstruation start होची, cell of endometrium secretion blood and unfertilized ovum menstrual flow आकार रे release होची, progesterone production is reduced, low progesterone present होची menstrual flow रे. follicular phase केते डे रु केते डे 16 to 13 डे कौन होची endometrium rebuilds, new formation or repair of endometrium occur, FSH secrete होची, estrogen secretion increases in this phase. Next ovulatory phase केते डे 14th डे event कौन कौन होची LH and FSH attain peak, both LH hormone और FSH hormone पूरा high level रे थाउचंती, concentration of estrogen increases in the blood plus ovulation will occur. Next third phase is your luteal phase. Days, how many number of days? 15 to 28 days. Event what occurs? Corpus luteum secretes progesterone, endometrium thickens and uterine gland becomes secretory. So endometrium lining thick है कि पूरा पूरी prepare है जब and uterine glands will start secreting, they will become secretory.
So these are the events. This is about your menstruation cycle. And one more point, that this menstruation cycle occurs in case of your primate mammals, that is man, human being, apes, they undergo this cycle. And for non-primate mammal, there is another cycle that is called as your oyster cycle. Non-primate mammal undergoes oyster cycle. In oyster cycle also we'll see all these events. Menstruation cycle रे जो phases जगह देखिले, oyster cycle रे भी से same phases जगह देखिबा, but difference कौन? oyster cycle case रे bleeding हेबने or blood flow will not occur, or this endometrium lining rupture and this is not released out of body. Menstruation cycle रे the blood flow occurs, endometrium lining is released out of the body, but in case of oyster cycle, the endometrium lining is reabsorbed into the body. It is reabsorbed inside the body, and at that time the female will undergo the copulation phase, that is called as the heat period. In that time only the female can undergo copulation. That is in case of oyster cycle.